farmers' income have not been doubled. This is the premise of this government that by 2022, farmers' income will double. I will ask personally to the government, can the government say that by now it has been able to double the income of the farmers? Can they say it? No, sir. The farmers of the income has not yet been doubled. Sir, had the farmers' income been doubled, you'll be astonished to know that why the farmers of the country are still committing suicide every day. Sir, it is not my report. It is the report of the National Crime Record Bureau. It is NCRB data. And according to the NCRB data, as many as 42,480 farmers and daily wagers committed suicide in 2019. This is 2019 report, not the latest report, which is an increase of 6% from the previous year. So every year the number of farmers' suicide is going on. Why? If they are getting the MSP, now in the question hour I put the question, and other honourable members also put the question about MSP. I think government gave a very evasive reply. Government is not coming out with a reply whether they will bring a law in this house to ensure MSP legal coverage to MSP. Government refused to do that, and that is one of the demands of the agitating farmers of this country, sir. And most of the farmers in this country, they are small and marginal farmers, and they are committing suicide. The farm laborers are committing suicide. If the economic standard of the farmers, the government has been able to increase, then why the farmers is compelled to go for committing suicide? Has the government an answer for this, sir? So this is a very pertinent question, sir. The plight of the farmers, I don't think, had the farmers been in a happy condition, in a very sound economic condition, thousands and lakhs of farmers would not have been gone for agitation in the border of this country. Sir, just now the railway minister is very much present here. I will compliment the railway minister that he has given a good amount of sanction to the different projects of Odisha, sir. I compliment him. Sir, but one thing, sir, why stepmotherly attitude is being shown to Odisha, my own state? Sir, I will give only one example. Our CM has repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha state under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. But we are told that zones are not formed on state boundary line. The reply of the government is, zones are not formed on state boundary line. Okay, sir, I agree. Zones are not formed on state boundary line. But now the South Coast Railway zone has been formed on state boundary line. And at which cost? At the cost of the East Coast Railways. Why this discrimination, sir? When our request has been turned down, then why is in some other state you are going for state level boundary and constituting the railway zone, sir? Sir, you have taken away a portion of Andhra Pradesh from East Coast Railway. Then why Raurkela and Jharsuguda, etc.? This is our old demand. Now Jharsuguda and Raurkela, it is a Chakradharpur division outside Odisha. So our request is, you bring Raurkela and Jharsuguda and other areas, constitute a separate division, merge it with the East Coast Railways. The reply is, railway zones are not constituted on state boundaries. If it is not constituted on the basis of state boundaries, then why it happened in Andhra Pradesh? So therefore, sir, we feel that in some respect, discrimination is meted out to my state, Odisha, sir. Sir, the President has mentioned about forming two All India Institute of Medical Sciences in Jammu, one in Jammu and one in Kashmir. I welcome it, sir. It is a very, very good decision, sir. But, sir, there are some other areas in this country where health services are very poor. I will cite one example. It is Sundargarh in Odisha, sir. It is a tribal-dominated area, and it is adjacent to Jharkhand, which is also a tribal-dominated area. So, the request of my state government, my Chief Minister Naveen Patnaik has been all the time requesting the central government to open an AIIMS Institute in Sundargarh, sir. I welcome the decision of the government that two AIIMS are being opened, one in Jammu and one in Kashmir.
but some other areas in the country are there, mostly dominated by the tribal population, where health services are poor. So therefore, our request is to open a AIMS at Sundargarh as well. Sir, there are some states in the country, Odisha, Bihar, Jharkhand, they are mining state, mine-producing state, mine-bearing states, sir. And Government of India is collecting a clean environment cess. Earlier per ton, they were collecting 200 rupees. Now it has been enhanced and they are collecting 400 rupees per ton collected by the center. Sir, Odisha government have requested for renaming the cess as environment and rehabilitation cess. Sir, we are suffering. The mine-bearing states are suffering. Our environment is polluted. Our trees are cut. And Government of India is collecting the cess in the name of clean environment cess. And we, this mine-bearing state, we do not get a single pie on that. So my Chief Minister Naveen Patnaik has always been requesting that rename it as cess, environment and rehabilitation cess, and earmark at least 60% of coal for the coal-bearing states. This has been our request. Government of India is not considering. Sir, cess and surcharge. Sir, the share of this gross tax revenue for the Union government increased from 7.5% to about 19% in the last 20 years. Cess and surcharge. Government of India is imposing cess and surcharge on petroleum, on petrol, on diesel, on liquor product, and some other products also. And the increased trend of center to rely on cess and surcharge denies the states their rightful share in tax devolution. Because the cess and surcharge amount, it is not going to the divisible pool. And the states are not entitled to get a share of it as per the recommendation of the Finance Commission, sir. So our request to the central is that the revenue thus generated should form of the divisible pool so that the concerned states can get a benefit of that thing. Sir, during the pandemic, okay, the central government spent a lot of money. The state government as well spent a lot of money for that, sir. But from that fund will come. So this is our genuine and rightful demand. So I urge upon the central government to consider. Sir, the Honorable President in his speech has mentioned about women empowerment. And the President says, women empowerment is one of the top priority of the government. Sir, it is just contrary of the fact, sir. Sir, okay, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao, lot of slogans are being there, sir. Sir, I will say only one thing, sir. Okay, People Talak Bill was passed by this House. And we said that among the minority communities, Muslim communities, lot of superstitions are there. We have to deal with that. And everybody supported the People Talak Bill, sir. Sir, I will put one question here. What happened in Sabarimala in Kerala? What was the judgment of the Supreme Court? What was the stand of the Bharatiya Janata Party? There are two All India largest national political parties. One is Bharatiya Janata Party, one is Congress Party. What was their stand on that? On the one hand, we say about women emancipation. And on the other hand, we support preventing the women from entering into a table. We are not even prepared to go by the judgment of the Supreme Court. What was the Supreme Court judgment? Supreme Court held about Sabarimala that any exception placed on women because of biological differences violates the Constitution. It violates the right to equality under Article 14 and freedom of religion under Article 25. Why this double standard? On the one hand, we say about women emancipation. On the other hand, we prevent the women from entering into a temple and pray there and offer their prayer to the Lord. So this is double standard, sir. So I think we should, about women reservation bill, sir. Sir, this House passed this women reservation bill in 2010. But still that bill has not become an act, sir. Sir, women, you'll be astonished to know, sir, women represent 10.5% of the total members of the Indian Parliament. It is the latest. What is women representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha, sir?
And in the legislative assembly across all the state, it is a pitiable 9% only. If you take into consideration the human representation in all the assemblies together, it is hardly 9%. And it is not my report, it is the report of Election Commission of India, sir. Sure, even in Muslim countries, those who are considered to be very conservative people, even in Muslim countries, human representation is much more than what we have here. And even Pakistan and Bangladesh, two Muslim-dominated countries, they have passed the Human Reservation Bill Act. But we are reluctant. Why? On the one hand, we say of human emancipation. On the one hand, we say of beti badhao, beti bachao. On the one hand, we say of bringing the women to the mainstream of the society. But still we refuse to give them their political right. Why? It was done by them also. It has been done by these people also. So why not this government is bringing this bill? What prevents them? So this is, I'm sorry to say, this is just hypocrisy. So I urge upon this government, it is high time, please bring this bill of human reservation. Sir, your time is over, and I'm coming. also concluding, sir. Yes. Very shortly I'm concluding. Give me Please, 2-3 please. minutes more time, Please. sir. Sir, one important thing I want to say, that Odisha is a cyclone-prone state. Natural calamities all the time hitting Odisha. You will be surprised to know, during the last 100 years, we have been hit by natural calamity for more than 90 times. Flood, drought, cyclone, super cyclone, and that is devastating our economy. That is devastating our economy. So we have been requesting, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has all the time requesting central government to give a special category status to states like Odisha. If not special status, at least a special focus category status to Odisha, and treat us as part of the northeastern states and the Himalayan states, and give that economic benefit to the state like Odisha. That is not being heeded by the central government so far, sir. So, sir, last point I will say, sir, about federalism. This is a federal country. Our constitution provides for federalism, sir. But we feel, this House knows it, in every bill there is one or two provision taking away the right of the state government. What type of federalism this is, sir? And the latest decision the government has taken, that at any moment central government can withdraw any IAS officer from any state without the consent of the particular state. What type of federalism this is? What type of federalism this is? So you are not strengthening the federal character of our constitution of our country, we are weakening it. So therefore, my submission to the central government, kindly desist from doing this. This is a federal country, and federalism is our essence. You can't go away with this. So therefore, sir, if we want to take this country unitedly, if you want this country to progress, develop unitedly, if you want to take all the states to the mainstream of development of this country, don't eschew the principle of federalism. With this, sir, I, in spite of the fact that there are few contradictions in the speech of the President, करनी और कथनी में बहुत फर्क नजर में आता है. In spite of that, I support the motion of thanking the President on his address to the joint session of Parliament. Thank you, sir. Thank you, Prasanna Acharya ji. The next speaker, Shri K. Somu Prasad. I think he is in Lok Sabha chamber. I am in Lok Sabha. Lok Sabha, sir. Yes, sir, please. Thank you, sir. The Honorable President, in his speech, tried to sketch a picture of a colorful and bright present and future India. According to him, India is a fast developing nation without poverty, malnutrition, unemployment, illiteracy, etc. As per his version, the Indian citizens are living in a semi-paradise. And when the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji complete his tenure, India would become another paradise. But what is the reality, sir?
It is far away from the sketches. The presidential address does not narrate the real picture of the political, economical, social realities of the country, sir. The content of the speech is nothing but the usual combination of high rhetoric, unrealistic claims of the achievements of the government, sir. Sir, let me permit to record my reservations, disappointments, regret about the presidential address. Sir, when the Honorable President spoke about the handling of pandemic, he became eloquent. But we know the central government was an utter failure in handling the situation. Sir, how could we forget the floating dead bodies in the river Ganga? How could we forget the died innocent children and patients without getting oxygen and treatment at the proper time? How could we forget the long queue of the dead bodies in the crematoriums? Sir, the Honorable President said about vaccination. Sir, population-wise, we are the second largest country in the world. Administering 150 crores vaccines to 100 crore people within 1 year is not a big deal. It could have been finished earlier. Actually, the government failed to administer 2 doses of vaccine to the entire citizen within this period. Sir, the President praised the frontline workers of the pandemic. But what the government did for them? Had the government provided any security, any protection, any insurance facilities to their life, any incentive? Nothing, sir. Sir, when we go through each and every performance of the government, especially in the pandemic period, the government did not act properly. The government was utilizing the pandemic situation to implement its anti-people policies over them. The price hike of the petroleum products and the disinvestment of the public sector undertakings are the best examples, sir. The government is selling the share of the public sector undertakings which are running profitably and using the money to save private sector companies which are running in loss. Sir, who can support the price hike of domestic LPG and kerosene? Sir, the youth, especially the educated youth in India, are in severe frustration and mental agony because of the less job opportunities. Every day the unemployment rate is increasing. Disinvestment of the PSUs never help to create new job opportunities. Moreover, it would decrease the existing job chances. Sir, at the same time, the government is not ready to fill the existing vacancies. As per documents of the Government of India, a large number of posts in different ministries are kept vacant for the last several years. Total number of vacancies would come about 12.3 lakhs, sir. In the Defence Ministry itself, there are 2.4 lakhs civil posts are vacant, 1.28 lakhs in the Home Ministry, while it is 2.37 lakhs in the Railway. More than 7,000 vacancies are there in Health and Family Welfare Ministry. In the higher education section, it is 25,000 vacancies, sir. Sir, in the Central Police Force, the vacancies are 96,000. Sir, the disinvestment and the undeclared ban on appointment would badly affect the marginalized sections and Dalits. The Honorable President again keep mum on issues like social justice and reservation in his speech. Sir, what is the contribution of the government in NRE section? The government is dividing the workers according to their caste and religion. Separate wages for SC, ST and general categories, sir. The workers who are working together in the same field are divided as ST, SC and general category workers. It is too bad, sir. The wages for SC, ST workers is not distributed properly. 3 months wages arrears are pending in Kerala. It should be cleared immediately, sir. Sir, there are lakhs and lakhs of contract workers and scheme workers working for several years. But the President in his speech, nothing mentioned about the regularization of the scheme workers. The Honorable President in his speech explained about the Prime Minister's Awaaz Yojana. He said that more than 2 crore Pakka houses had been provided to the poor. I welcome, sir. But as per the socio-economic caste census, there are 24.39 crore households in India. Out of it, 17.91 crore are living in villages. Out of the 17.91 crore rural households, 56% are landless, sir. Let us examine the status of the SC and ST. 70% of the SC and 50% of the ST are landless. Sir, without a piece of land,
How could they construct a house? Land reform is the only remedy, sir. The President is keeping mum on this serious matter. Sir, disinvestment of the public sector undertaking badly affects the job chances of the weaker sections, especially SC, ST in the society. Reservation in employment is introduced only in government jobs and public sector undertaking. When a public sector undertaking becomes a private one, there ends the reservation in employment. Sir, in order to compensate the job loss due to the privatization, the demand for job reservation in private sector should be considered very seriously, sir. Sir, moreover, there are several government departments, including defense and judiciary, where the reservation is not implemented. Sir, without diluting the educational qualification or physical fitness, the reservation can be implemented even in defense department. Sir, in judiciary, also reservation can be implemented without diluting educational qualification and bar experiences, sir. Sir, as you know, in Kerala we have a very good health care system up to the bottom level. There is a long-standing demand for Kerala. The demand of Kerala for aims, it is still pending without consideration, sir. Sir, as per our constitution, India is a union of states and the constitution gives much importance to the federalism. The constitution upholds the federal character, but the central government always imposes unilateral decisions on the state governments and curbs the state power. Sir, the governors appointed by the center most of the time are acting as political agents of the central government. The Tamil Nadu example is the nearest one, sir. That is, now the amendments in consent rule related to the deputation and transfer of IAS officers is one of the best examples, which reveals the intention of the center to interfere in the state administration. The center should withdraw from such unconstitutional movements, sir. Thank you, sir. Thank you, Somu Prasad ji. Now I request Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रपति जी के महामहिम के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपना पक्ष, दल का पक्ष रखने खड़ा हुआ हूं। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, शुरुआत यूं हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमारे यहां इस रवायत की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे यहां ये परंपरा नहीं थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो मैं सदन के अपने साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950, जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आते थे, देश के सम्मान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई।
तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए माननीय सभापति महोदय। अब दिक्कत ये होती है ना माननीय सभापति महोदय कि अभिभाषण में सर्वेश्वर की एक लाइन थी सभापति महोदय, अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यही रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ की। सर पैरा 4 माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का है जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी में मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी 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 लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर, लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोली से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया। बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर, माननीय
सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार, काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए। उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर। इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सर। समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है। सर मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है। बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर, आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है। वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई है केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, then democracy everywhere is destroyed and everybody will suffer. आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, he has to write another book, fall of BJP. सर अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना, प्रोफेसर जी सुनने में बहुत अच्छा लगता आपका टाइम। सर मैं बस एक आध 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं सर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है। ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया सर? अब मैं एक एक कह करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं सर, ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श है, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है सर। गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप, अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी, पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है, पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर बिहार इसमें आता है या नहीं आता? या बिहार से 39 सांसद ले लिए, बिहार का काम खत्म? सर मैंने पहले भी कहा था,
अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है। बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर, मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में। घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना, तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में, कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर, एक ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है। जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। और आखिरी में सर 14 प्लीज कंक्लूड। 30 सेकेंड सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई। 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत आभार। सर, मुझे मौका मिला है शिवसेना की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कुछ अपनी राय रखने का। बहुत ध्यान से हमने राष्ट्रपति जी की स्पीच को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, देश के सामने जो दिशा होती है वो रखने का काम किया। और उनकी भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं, स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार है। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है। और मैं उम्मीद करती हूं और मैं बिलीव करती हूं, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन ओनली बी बिल्ट जहां हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। उन्होंने किसानों की बात की। उनकी भाषण से तो ऐसा लगा जैसे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? खुश हैं, किसान खुशहाल हैं, प्रगति हो रही है देश की। पर सच्चाई ये है कि उस भाषण में एक भी बार राष्ट्रपति जी ने देश के सामने ये सच नहीं रखा कि 700 से ज्यादा हमारे किसान ने अपनी जान दी है। और इसलिए जान देनी पड़ी है उनको क्योंकि 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए, प्रजातंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ करके ये कानून पास हुए। और इन्हीं किसानों ने उनको मजबूर कर दिया कि ये 3 काले कानून वापस लें। पर उस भाषण में कहीं भी उन 700 लोगों के बारे में, 700 किसानों के परिवारों को किसी तरीके के लिए शोक संदेश नहीं निकल पाया। हम भूल जाते हैं किस तरीके से लखीमपुर खीरी हो या हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसान हो, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, कितनों को तो कुचला चल गया। पर वो मंत्री साहब के सुपुत्र आराम से बैठे हैं और मंत्री जी आए दिन यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं।
दुख इस बात का होता है कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पद होता है, राष्ट्रपति जी का पद होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, पर किस तरीके से रोज फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर चुप्पी बांधे रहे। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वो लोग केंद्र सरकार का एजेंडा चलाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं के बारे में भी कहा कि हमारे युवा प्रगति की ओर हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे 2014 से पहले, अभी थोड़े खामोश हैं। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। केंद्र सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आज ही मैं सवेरे सुन रही थी, इस बात पे चुप होती है। आत्मनिर्भर भारत करते करते रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। बेरोजगारी हमारे देश की चरम सीमा पर है। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में बात करी और हर बार सुनकर खुशी होती है कि महिलाओं के बारे में कुछ सोच है, सूझबूझ है सरकार को लेकर, पर हकीकत क्या है? वो देश की महिलाओं से एक असुरक्षित माहौल जो बन रहा है उस के बारे में एक चुप्पी बंधी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूं, उसमें कहा गया 85% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो प्रचार में खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने आकर कहा 85% नहीं है, 58% है। अरे 50% से ज्यादा है और यह हमें गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि सच में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। पर सच्चाई ये है कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, पर जब महिलाओं पे, खास करके किसी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ये सरकार चुप्पी बांधे रहती है। सरकार से मैं कहती रह गई, निवेदन करती रह गई कि ये मामला महिला सुरक्षा का है, पर सरकार ने किसी तरीके का काम नहीं किया। और ये आज मुंबई पुलिस है जिसने महिलाओं को सम्मान देकर वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। ऐसे रूल्स बनने जरूरी हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस होना जरूरी है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें कहा जाता है सर, बार बार ये कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड जीएसटी हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को धकेल कर हो रहा है। और जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जो स्टेट्स हैं उनको उनका जीएसटी कलेक्शन का राइट ड्यू भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है पर उनको जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जब हम अभिभाषण करें, हम भाषण करें, हम इन सब मुद्दों की बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी सर, देश के डिफेंस में, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा जितना खर्च किया जाए वो कम है, पर वो खर्चा कर कर, देश की टैक्स पेयर्स मनी का खर्चा कर कर आप ऐसा स्पाईवेयर खरीदते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जगह देशवासियों के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजरायल खुद हो,
उन्होंने पेगासस पे जांच शुरू की है और बार बार कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, हवाला देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे मुद्दे थे, पर फिर भी जब यूपीए का कार्यकाल था उस पर चर्चा आए दिन पार्लियामेंट में होती थी, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया जाता था। तो पेगासस पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी आपसे सवाल है। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पेगासस में ये निकली है, जैसे मैंने कहा सारे देश उस पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इजरायल खुद कह रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक जो इनके यार हैं, उन्होंने भी कहा है किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। सारे देश कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फोन मेकर्स बोल रहे हैं। एकमात्र हमारा देश है जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम महिलाओं के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष की नेता हो, हम उन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम पेगासस डाल सकते हैं, उनके फोटोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैमरा यूज कर सकते हैं, उनका ऑडियो यूज कर सकते हैं। एकमात्र देश हमारा है जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो हवाला दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका भी नाम पेगासस की सर्वेलेंस रिपोर्ट में आया है। तो इट इज सच अ शेम कि आज उनको अपने आप को नहीं डिफेंड कर इस सरकार को डिफेंड करने पे मजबूर हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर चलें। जब सबका साथ सबका विकास की बात रखी जाती है तो सही मायने में हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या कोई भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, वो सब आपके देशवासी हैं। इंडियंस फर्स्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना कर्तव्य उनके विकास की ओर, उनकी सुरक्षा की ओर और उनकी सारी जो उम्मीदें हैं इस देश से और इस देश की सरकार से, उसको पूरा करने का कर्तव्य आपका बनता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म कर ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों पे कर रही है उसको बंद करे और सही मायने में देश का जो सही दिशा और दशा है उसको तय करें। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I call upon Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. 12:30 is. No, you can take your time. You can take your time. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. The customary annual address of the Honorable President of India to the members of both the houses of Parliament has certain constitutional sanctity. Sir, the main stakeholders to ensure such developed and modern India over the next 25 years are the state governments. Our country is a union of states. The state governments are primary agencies of the implementation of various developmental and welfare projects initiatives, both central and state governments. Nobody disputes the fact that all-round development progress of our country critically dependent on the effectiveness of the state governments. So, Honourable Chairman, sir, the limited time available to me, I would like to place on the record on my concern that my party TDP as to how the present state of affairs in my state of Andhra Pradesh are proving to be a big hurdle realizing the dream of India that Honourable President evinced in his address to all the MPs on 31st of this month. I am sorry to state with the responsibility that the Andhra Pradesh is just in a state of total collapse. The Andhra Pradesh government is miserably failed in respect of parameters like administration, financial management, law and order that I have earlier referred in the progress. I would elaborate the same, sir. The state finances are utter chaos. The state government is just thriving on borrowing every day. Due to last 2.5 years, the state government has borrowed over 3.5 lakhs crores, various sources, and there is no proper accounts where the monies are there. New corporations are being created just the sole purpose of borrowing the funds to raise or spent on activities for which such corporations are set up. There is huge unauthorized diversion of funds. The August House will be stunned to know the borrowings have been made, making the Honourable Governor as a guarantor by the name of the individual capacity. Sir, situation is so bad in the state of Andhra Pradesh. The employees are not being paid in time. Pensions are out in state daily distress as they did not get their pensions in time. Reflecting the measure in the state of financial state, the further report last pay revision commission, the employees of the state wise now getting lower salaries.
This because of the state government has not made any public policy, the PRC report, and instead of acting the recommendations of the committee, now the employees are served a strike notice and are now taking roads against the state government. Sir, I feel ashamed to share that the August House that the Andhra Pradesh government is not sparing the poor and the weaker sections in mobilizing the resources to run the day-to-day governance. To give an example, the poor and the weaker sections have built small houses year back are now being faced to pay about 10,000 each other under one-time settlement scheme. The large number of volunteers engaged by the state governments are being forced to foul means to collect the monies from the poor and weaker sections. The honourable members will be shocked to know that the state government has mortgaged revenues from liquor sale for a period of next 25 years to raise borrowings. This is being done by the ruling party, and that has promised during the election campaign of 2019 that liquor was banned gradually. In effect, the Andhra Pradesh government is running, pleasing the poor and weaker sections. The central government, through President address that we are now discussing, has called infrastructure development. I am sorry to say, my fellow members, that productive industrial economic activity in my state has come to a virtual halt. The Honourable President referred to study increase of GST revenues. The tax revenues has also substantially increased in recent times. Logically, revenues to my state have also been on rise. Still, infrastructure development has come to a complete halt in the state. Not even a kilometre of existing roads has been repaired since 2019, leaving alone laying new roads. Accidents due to poor roads and the attendants' death are daily occurrence in my state. The poor are the worst hit due to a lack of basic transport infrastructure. The YSRCP government unmoved the situation so bad there is no response by the contractors to tenders floated by the state government. It because they knew that the state government will not pay the works done with the government running on daily borrowings. Under the important Jal Jeevan measures, 500 crores has not been paid to the contractors. For the works done during the previous TDP government and the YSRCP government did not pay thousands of crores payment due to contractors, including Narega works. All funds have been diverted. It is only after a long legal battle, finally under the orders of the High Court, some payments were made. So the contractors are not... Ravindra Kumar ji, please stop your speech. You will continue on Monday. ठीक है ना? Obliged. जो your remaining part of the speech that will you cover please on Monday. Obliged. Thank you. The time is over already. So now it's a private member business. Private member bills. Honorable members, just your attention please. During the private members legislative business day of the last session on the 3rd December 2021, Professor Manoj Kumar Jha, member, had opposed without giving any prior notice the motion moved by Sri K.J. Alphonse, member, for leave to introduce his private member's bill, namely the Constitution Amendment Bill 2021, Amendment of Preamble. He had argued inter alia that preamble is part of the basic structure of the Constitution and the bill may not be allowed for introduction. He had also referred to Rule 62(2) of the Rules of Procedure and contended that such bill which did not have the previous sanction or recommendation of the President cannot be introduced in the House. It was clarified on that day by me that Rule 67 of the Rules of Procedure states that if a motion for leave to introduce a bill is opposed, the chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question for the decision of the House. It was also informed that a decision on the motion for leave to introduce a bill had to be taken by the House and not by the chair. However, on a request made by the Minister of State for Parliamentary Affairs and after taking the sense of the House, the introduction of the bill was deferred. Preamble is part of the Constitution and as per Article 368 of the Constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution, and a bill for the purpose can be introduced in either House of the Parliament. There are a number of instances in past when private members' constitution amendment bills to amend the preamble have been introduced in both the Houses of Parliament, and they are on records. As already clarified by me
on that day, that is on 3rd December 2021, if the introduction of a bill is opposed on the ground of legislative competence of the council decides the same and not the chair. There are a number of rulings given by the chair in this house on this issue taking the same stand in the past. I would like to quote a couple of them. On 4th September 1959, the then Deputy Chairman Rajya Sabha gave the following ruling, and I quote, Sri Bhupesh Gupta has introduced a bill for amending the Representation of the People's Act 1951. The Law Minister raised a point of order that the bill is ultra-virus of the Constitution as it indirectly seeks to amend the Constitution by introducing a provision for recall under the guise of disqualification under the Representation of the People Act. This objection was not taken at the introduction stage, but I still feel that there is a strong force in the objection raised by the Law Minister and it may amount to an amendment to the Constitution. But the chair has never taken the responsibility of deciding the ultra-viruses or otherwise of a bill. There have been several decisions of the chair in this connection. In fact, on 23rd April 1951, when an objection was taken in the Provisional Parliament to the Forward Context Regulation Bill that it was ultra-viruses of the Constitution, the Speaker observed. The position which I had made clear was that the question of ultra-viruses will not be decided by the chair, but that it may be left to the House. If it comes to the conclusion that it is ultra-viruses, the House may reject the bill. If the House accepts the bill for consideration, then the party aggrieved has his remedy in the Supreme Court or other courts. Therefore, I said it was no use going in detail into questions of constitutional niceties, because after all, these are things which can best be argued by lawyers, and it is not proper to take the time of the House over this long discussion of niceties. Again in 1953, when the constitutionality of the Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill was raised, it has been observed. In all these matters, the Speaker has never taken upon himself the responsibility of deciding the point of order when it is constitutional or otherwise. It is for the House to take this also into consideration in voting down the bill or accepting it. Under the circumstances, I leave it to the House to accept or not to accept the bill, unquote. In another occasion, on the 11th May 1963, the then Chairman, Rajya Sabha gave the following ruling, and I quote, I thank the honourable members for the assistance they have given me in coming to a conclusion. Prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling, because in the central legislature, it has been the accepted practice for the chair not to take upon itself the responsibility of deciding whether the House has the legislative competence to entertain a bill or whether a bill is ultra-viruses. When any such question is raised, the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. The main reason for the adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is the function of the courts and ultimately of the Supreme Court to decide such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he has not facilities or material on which to come to a satisfactory decision. It is the sole privilege and duty of the House to decide every question that arises on a motion moved by a member. So if the matter is left to the House to decide, the House may reject the bill if it is of the view that the bill is ultra-viruses. If, however, the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately in the Supreme Court. This question came before the central legislatures on various occasions, and the accepted practice has been as stated by me, unquote. As regards the objection raised by Professor Manoj Kumar Jha, under Rule 62(2), the bill does not have the previous sanction or recommendation of the President. I may clarify here that there is no such requirement for introduction of the bill under reference. Therefore, there is no question of any doubt on the
admissibility of the bill for introduction seeking to amend the preamble to the Constitution. Be that as it may, the bill has been listed in today's agenda for introduction. The House may decide about the manner of disposal of the motion when the motion for introduction of the proposed Constitution Amendment Bill 2021, amendment of preamble, is moved by Sri K.J. Alphonse. Thank you. Sir, I do not think that the House itself also has any mandate or is competent to amend the preamble of the Constitution. Neither the Council of States nor the House of the People. So it's very clear that what is enshrined there, it's not a question of tinkering with the basic structure. There are umpteen judgments of the Supreme Court also on that cannot be. And various governments, if they have come up with any constitutional amendment which has been challenged and questioned, they have been cast aside by the Honorable Supreme Court. Here we are talking of the very preamble of the Constitution. So I would say, rather urge the member concerned also, that in the larger interest of this country, where questions are being raised about the integrity of our commitment to the Indian Constitution and its preamble, this should not be entertained. Thank you. Thank you, Mani Anandji. Please. Yes, please. Point here, sir. So we also know that two changes were brought in the preamble to the Constitution by the 42nd Amendment in this country, sir. Two words, socialist and secular, were inserted into the preamble. So it is not that the preamble cannot be changed. Thank you. Mani Sukhendu Sekhar. Sir, I support the views expressed by Mr. Anand Sharmaji and Manoj Jhaji. In Keshavananda Bharati case, the Honorable Supreme Court, they decided inter alia that sovereignty of Parliament is there, but the supremacy of the Constitution cannot be ruled out. So, whether it is Parliament or any other constitutional or statutory authority, they have to abide by the Constitution. Since the point raised by Anand Sharmaji and the other speaker who has said about the constitutional amendment, that is altogether a different thing, and it happened long back before the judgment delivered in Keshavananda Bharati case. Absolutely. Therefore, that judgment of Keshavananda Bharati is still subsisting, and I would request the chair not to allow this. Mani Sadasya, please. Sir, the question I think here is that whether we can add a sentence to the preamble or not, but whether the basic structure of the Constitution can be amended or not. The country believes, the Constitution believes that these words is a part of the basic structure that can be challenged. Supreme Court and the Parliament many a times told us that. Now a time has come when somebody is coming here to change the Constitution and the basic structure. That can't be allowed. Yes, Abdul Wahabji. You are the last speaker now. Because I will close it. Please, no. Please. No, it's not open discussion. This one, amendment of Constitution. Okay, the bill came. Where is the proposer? Sitting in the Central Hall? Thank you. माननीय सदस्यगण, चेयर की पोजीशन इसमें क्या है मैंने क्लियर की कई रूलिंग से, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड, कोटेड 4th September 1959 ruling. Number 2, yes, again in 1953 Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill, such matters were settled here by ruling. Again on 11th May 1963 the ruling was very clear. So far as chair's role is concerned, so chair, the House can decide or the court can decide, not the chair. That is. Please take your seat. No, I have not allowed. Let us close this discussion. Mani Anand. I am moving. Please. You have already availed your occasion. Please. I have already clarified the position. One sentence. Sir, everyone sitting here, whether it's the government, the ministers,
Honorable Chair, and all of us have sworn by this Constitution as members when we are sworn in. Thank you. Can we then change the preamble? थैंक यू माननीय सदस्यगण, ये सारे जो हमने रूलिंग्स कोर्ट की, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे प्रोविजंस यहाँ रूलिंग में दिए गए हैं सिंस 1951. सो आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेल. प्राइवेट मेंबर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस बिल्स फॉर इंट्रोडक्शन. द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020. डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना. डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना. Just wait. Yes, please, Dr. Kiruri Lal Mila, not present. Since he is not present, not moved, I am not going to allow any discussion on this. Yes, you had. Dr. Amar Patnaik, the Constitution Amendment Bill 2020, Amendment of Preamble and Article 51A. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2020. So I, Dr. Amar Patnaik, move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India for insertion of the word ahimsa in the preamble to the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Lokpal and Lokayuks Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Lokpal and Lokayuks Amendment Bill 2021. So I, Dr. Amar Patnaik, rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Lokpal and the Lok Ayuktas Act 2013. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Ayes always have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. So I rise to introduce a bill further to amend the Central Educational Institutions Reservation in Admissions Act 2006 to provide for reservation for students from government schools in central educational institutions. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien ji, not absent. The Criminal Laws Amendment Bill 2021, Dr. Prashant Nanda to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Prashant Nanda ji. I introduce the bill. Thank you. The Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021, Sri Subhash Chandra Singh to move for leave to introduce the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021. Sri Subhash Chandra Singh. Not present. Sri Subhash Chandra Singh. Absent. Sri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sri K.J. Alphonse. Absent. Dr. V. Sivasan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021.
Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend Constitution of India. Constitution Bill 221 amendment of the preamble. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sivdasan. I introduce the bill, sir. Thank you. The Right to Health Bill 2021. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the Right to Health Bill 2021. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living of a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, thank you. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2021, Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Indian Penal Code Amendment Bill 2021. Thank you, Deputy Chairman. I, Elamaram Karim, to move for leave to introduce a bill further to amend Indian Penal Code 1860. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karimji. Introduce the bill. Thank you. The Labour Codes Repeal Bill 2021. Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Labour Codes Repeal Bill 2021. Sir, I move to leave to introduce a bill to repeal certain enactment related to Labour Code. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karimji. I introduce the bill. The Council of Climate Change Bill 2021. Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Council on Climate Change Bill 2021. Thank you, Chairman, sir. I rise to move for leave a bill to provide for the establishment of the Council as a centre and in each state and union territory for climate change action and the matters connected therewith or incidental thereto. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave a bill further to amend the Epidemic Diseases Act to keep in mind the significance of clear and consistent public health emergency law. Thank you, sir. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Darjeeling Sports University Bill 2021. Srimati Santa Chetri to move for leave to introduce the Darjeeling Sports University Bill 2022. Srimati Santa ji from Lok Sabha. Thank you, sir. I, Srimati Santa Chetri, to move for leave to introduce the bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in the state of West Bengal. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Santa Chetri ji. Yes, sir. I introduce the bill. Thank you. The Crop Diversification Corporation of India Bill 2022.
Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Absent. The Victim Impact Statement Bill 2022, Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Victim Impact Statement Bill 2022. Not present. Absent. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169, Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Chairman, sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, Article 168 and the omission of Article 169. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Criminal Laws Amendment Bill 2022, Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to ensure proper rehabilitation and relief to victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson. Thank you, please. Deputy Chairman, sir. In the year 1976, the state's power to legislate on education, including technical education, medical education and universities, was taken away from List 2 by constitutional amendment and same was kept in List 3. The bill seeks to restore and partition the power over these subjects parallelly between the state and the central, following the true spirit of cooperative federalism. For that purpose, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, namely the 7th Schedule. Thank you, P. Wilson ji. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri P. Wilson ji. Thank you to the House and the Chairman. I introduce the bill. Thank you. Now, bills for consideration and passing. The Companies Amendment Bill 2019. Further consideration of the following motion moved by Dr. Binay P. Sahasrabudhe ji on the 3rd December 2021 that the bill further to amend the Companies Act 2013 be taken into consideration. On 3rd December 2021, the minister concerned had concluded his speech while intervening in the discussion. The mover of the bill may accordingly be called upon to reply the discussion. Dr. Vinay P. Sahasrabudhe ji, please reply. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। सदस्यों को पता ही है, सदन जानता है कि 3 दिसंबर को, जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इस नाम से मैंने जो एक विधेयक यहाँ पर रखा था, एक प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई और विपक्ष से श्रीमान जयराम रमेश जी, फिर डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, श्री विजय साई रेड्डी जी, श्रीमती अमी याज्ञनिक जी,
हमारे मित्र श्री मनोज झा जी, फौजिया खान जी, महेश पोदार जी, हर्षवर्धन डूंगरपुर जी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने इस विषय पर अपने बिंदु रखे थे। इसमें से श्री जयराम रमेश जी ने और अमी यादनिक जी, मनोज जी, फौजिया खान जी, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और विरोध में कुछ अपने तर्क भी बताए थे। बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया था और इस तरीके से कानून में परिवर्तन होकर जो CSR का 2% होता है उसमें से उसका 25% ये हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारे यहाँ जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग में लाने के प्रति एक प्रावधान किया जाए, मैंडेटरी किया जाए, कानूनन उसको एक बंधन के रूप में लागू किया जाए। इस प्रस्ताव के प्रति बाकी सदस्यों ने समर्थन भी जुटाया था। कुल मिलाकर इस संदर्भ में हमारी भूमिका, मैंने स्वयं जब प्रस्ताव रखा था तब यही थी कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर अभी चल रहा है और सारी चीजें केवल सरकार करे, इस धारणा से पूरा समाज भी बाहर आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सबको अपील की है कि सबका प्रयास भी महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, तो एक दृष्टि से इसका एक प्रतीक रूप था। श्रीमान जयराम रमेश जी ने, अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, मगर मेरे प्रस्ताव का विरोध करते हुए 2 बिंदु मुख्य रूप में कहे थे। एक बिंदु ये था कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष पद के प्रति उनकी कल्पना ये थी कि जैसे शायद परिनियों में कहीं उल्लेख है कि प्रोफेशनल व्यक्ति की विशिष्ट, जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड हम कहेंगे, ऐसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। और वो कटाक्ष ये कर रहे थे, यद्यपि ये कहते हुए कि श्री तरुण विजय जो इस सदन के पूर्व में सदस्य थे और अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, उनके प्रति सद्भावना रखते हुए भी उन्होंने कहा कि शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति की नियुक्ति होना उपयोगी था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वैसे प्रोफेशनलिज्म की व्याख्या भी काफी व्यापक होती है। आज हम देखते हैं कि IAS अधिकारी कल अगर शिक्षा विभाग के सचिव है तो आज एकदम से स्टील विभाग के सचिव बन जाते हैं। ये तो व्यवस्था में है। तो एक जनरलिस्ट अप्रोच भी कई बार रहता है और श्री तरुण विजय जी की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए उसमें कुछ आपत्तिजनक है ऐसा मुझे नहीं लगता। और फिर जो काम श्री तरुण विजय जी ने विगत 1.5 साल में किया है वो भी मैं मानता हूं कि सदन के सम्मुख लाना उपयोगी रहेगा कि उल्लेखनीय काम है, क्योंकि कुल मिलाकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक काम होता है कि हेरिटेज बायलॉज जो होते हैं उसको बनाना, और ये काम बरसों से अटका हुआ था, आगे नहीं गया था। और उन्होंने ये हेरिटेज बायलॉज बनाने का और जो मॉन्यूमेंट्स है उनको कैटेगराइज करने का जो काम होता है, 918 मॉन्यूमेंट्स को विगत लगभग 2 सालों में उन्होंने ये काम किया है। इसका दायरा भी बढ़ाया है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी सामान्यतः जो पुराने खंडहर या पुराने वास्तु, पुरानी हमारी इमारतें, इनके बारे में देखती थी, मगर कई बार हमारे समाज में जो हमारे सिख बंधु है या जू संप्रदाय के लोग हैं, जैन या बुद्धिस्ट है, इनके इतिहास से संबंधित जो विरासत के स्थान है, हेरिटेज के स्थान है, जो मॉन्यूमेंट्स है, इनकी उपेक्षा हुई थी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये उपेक्षा अभी समाप्त हुई है। साथ ही साथ जो राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ है और तरह तरह के नए विषय जो सामने लाए जा रहे हैं, उसमें भी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की एक भूमिका रही है, जिसका नेतृत्व श्रीमान तरुण विजय अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी नियुक्ति के प्रति आक्षेप का कोई बहुत बड़ा मतलब है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो CSR का फंड है वो लोकल विषयों के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी बात कही थी। और अच्छा है उन्होंने इस विषय को छेड़ा। हम भी यही कहते हैं कि लोकल जरूर लाया जाए, क्योंकि देश में ये जो हमारे धरोहर के स्थल है, विरासत के स्थल है, वो हर जगह है, ऐसा नहीं कि वो विशिष्ट जगह पर है। और मैं उदाहरण देता हूं कि बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय, मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में भी इन दिनों किलों की जो दुर्दशा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वालों के राज में ही ये उपेक्षा चरम सीमा पर पहुंची है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्यों मैं इस विषय का आग्रह रख रहा हूं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई महानगर में एक माहिम का किला है।
माहिम तो बहुत निकट है और माहिम के किले पर माहिम थोड़ा साहस रखिए ना प्लीज थोड़ा टॉलरेंस माननीय प्रियंका जी, माननीय प्रियंका जी, तो जो ये माहिम का किला है अध्यक्ष महोदय, तो ये माहिम के किले पर बाकायदा एक खाटी खाना चल रहा था और वहां पर जानवरों की कत्ल खुलेआम होती थी। ये तो अच्छी बात है कि इतिहास के कुछ अध्येताओं ने और इन विरासत और हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में चिंता करने वालों ने ये बात महाराष्ट्र सरकार के सामने लाई, तो अभी वो कुछ बंद हुआ है, मगर वहां पर अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से किले का कब्जा लिए हुए हैं। आप एक बार जाकर देखिए महोदया, आप जाकर देखिए, आपका ज्ञान थोड़ा सीमित है, मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वर्धन करना चाहता हूं। तो ऐसी सारी स्थिति है, कहीं प्रार्थना स्थल बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, कहीं मजहर बनाई गई है। तो ये सारा योजनाबद्ध तरीके से, रायगढ़ का समाचार बीच में आया था कि कैसे रायगढ़ किले पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का किला है, वहां पर भी इस तरीके का एक गलत काम वहां पर हो रहा है, जिसको रोकने के बारे में प्रयास हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये प्रयास सफल भी हो जाए, और ये बताने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उदारमनस्क थे, ऐसे सारे अवैध जो काम हो रहे हैं उनको प्रश्रय देने की एक बहुत घिनौनी रणनीति आज की महाराष्ट्र की सरकार वहां पर अपना रही है, जिसका जितना निषेध हम करें, जितनी निर्भत्सना हम करें, कम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मुंबई की जो कंपनियां हैं, इनको अगर इस विषय में काम करने के लिए हम अवसर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे अवैध काम जो वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप में कुछ न कुछ हम कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 60 ऐसे किले हैं जो केंद्र सरकार के सुरक्षा में है, 47 किले हैं जो राज्य सरकार की सुरक्षा में है, और दुर्भाग्यवश राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण इन किलों के ऊपर ऐसे अवैध कामों की एक के बाद एक लगातार बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिसकी प्रति जितनी गहरी चिंता हम व्यक्त करें, मैं मानता हूं कि कम है। मान्यवर, इस बिल के बारे में बात करते समय इस सदन में उपस्थित बड़ी विद्वान कानून की जानकार श्रीमती अमी याज्ञनिक ने भी कुछ बिंदु रखे थे, और उन्होंने कहा था कि सीएसआर का उपयोग तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो आप क्यों मॉन्यूमेंट की सुरक्षा के लिए सीएसआर के पैसे के बारे में वकालत कर रहे। मैं माननीय सदस्य को यहां पर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कल्पना है उसमें संस्कृति का विकास भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आइडेंटिटी भी आती है। आखिरकार अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो भारतीय कहने के कुछ एक बिंदु है, कुछ मान बिंदु हमारे हैं, और इसमें हमारे ये धरोहर के सारे स्थल आते हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए ये सारे स्मारक स्थल आते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट से ये विपरीत है, ऐसा मानने की गलती हम न करें, ये मेरा आपको निवेदन है। आदरणीय उपसभापति जी, मुझे ये भी सुझाव दिया गया माननीय सदस्य से कि ये इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है, ये तो छोटा सा विषय है, आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनको प्रार्थना करिए और उनको कहिए कि थोड़ा धन आवंटन करिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो बात होती है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो बजट है वो सरकार ने बढ़ाया है, मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, और हम प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से संवाद भी करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री के साथ या नेता के साथ बोल रहे हो और नेता कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पूरी सुनवाई होती है, और पूरी सुनवाई के साथ हमारी बात को गंभीरता से ले जाने की हमारी पद्धति है, इसलिए वो तो बात सही है। और इसमें और भी एक बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इतिहास के बारे में एक दृष्टि अपनानी होती है ना, उसमें नए नए मॉन्यूमेंट भी बनाना जरूरी होता है। कई बार मुझे अचरज होता है उपसभापति महोदय कि हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मगर जिनके जन्मदिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में या त्योहार के रूप में या किसी आयोजन के माध्यम से मनाए जाते हैं, ऐसे केवल 3 प्रधानमंत्री हैं। माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदर है सबको, उनका जन्म दिवस हम बाल दिन मनाते हैं। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, उसको भी हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस को भी हम मनाते हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन नहीं थे, किसी का जन्मदिन नहीं मनाते हम। अटल जी का जन्मदिन हमने पार्टी में शुरू किया, बाद में सरकार ने लाया। आप पीवी नरसिंह राव को तो भूल जाते हैं।
प्लीज प्लीज नो, उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, सीट पर बैठकर आप ना बोलें, आप सब लोग प्लीज नो। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री पीवी नरसिंह राव, इस देश के इतिहास में उनका स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। बुद्धे जी का कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सहस्त्र बुद्धे जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। जब उनका निधन हुआ तो उनका अंत्य संस्कार यहाँ करने के बारे में आपत्ति जताई गई, उनके परिवार को वहाँ तेलंगाना में जाकर उनका अंत्य संस्कार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंत्य संस्कार करते थे तो उनकी समाधि बन जाती थी, जो समाधि कुछ चंद लोगों को नहीं चाहिए थी। ये बात है, इतनी संकीर्णता है यहाँ पर, और इसलिए अगर नए मॉन्यूमेंट बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें और आवंटन की जरूरत होगी। हमने यहाँ वॉर मेमोरियल बनाया, आपने तो कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पुलिस मेमोरियल बनाया, आपने तो अरे एक युद्ध का बनाया। अरे केवल एक युद्ध के जवानों के प्रति भावना का अभिव्यक्तिकरण उपयोगी नहीं है। सारे जवान जो भी देश के लिए बलिदान किए हैं, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। आपका जैसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। हमने उपसभापति महोदय, नेशनल रिकॉग्निशन का भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। हमने कभी अंतर नहीं किया। हमारे लिए सारे दिवंगत प्रधानमंत्री उतने ही माननीय हैं जितने कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए सभी प्रधानमंत्रियों का वस्तु संग्रहालय बन रहा है, हम सबको पता होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन की बात है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात है, हेरिटेज और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए यह कहना जरूरी होता है। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने की मुद्रा में नहीं हूं, आवश्यकता भी नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि देश की पहचान जो है वो एक अपने आप में देश का एक अस्तित्व रखती है। अगर हमारे देश में, आप में से कई लोग विपक्ष में है, यहां पर है, तेल अवीव गए होंगे इजराइल की राजधानी, या चाइना गए होंगे बीजिंग में, तो बीजिंग जाओ, तेल अवीव जाओ, आपको ध्यान में आता है कि बीजिंग में it is the chairman's authority. You are not on the chair. तो please keep quiet. Please, no, you are not supposed to speak. It's not going on record. Please. जब हम बीजिंग में जाते हैं उपसभापति महोदय, सीट पर बैठकर हमें लगता है कि अभी हम माननीय चेयरमैन ने मांडारिन अमेरिका में गए हैं। आपके लिए किस तरह से बिहेव करना चाहिए अभी बताया। प्लीज, राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर में जो बिहेव है उसको फॉलो करिए। प्लीज, यू आर नॉट देयर टू डिसाइड, उसके लिए आप डिसाइड करने को नहीं है यहाँ पर। बैठे, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनको आपत्ति क्या है जी? अगर ये स्थिति होगी, एक दूसरे को आप डिस्टर्ब करेंगे, नहीं चलेगा। बैठ जाइए। आपत्ति क्यों है आप? बैठ जाइए। तो मान्यवर, मैं ये कह रहा था कि हर शहर की पहचान होती है। आप बीजिंग जाते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि शायद आप मांडारिन अमेरिका में हैं। तेल अवीव जाते हैं तो लगता है कि आप हिब्रू अमेरिका में है। दिल्ली में और मुंबई में ये आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने देश की पहचान, अपने शहरों की पहचान, यहाँ की जो ऐतिहासिक संपदा है उसकी पहचान कायम रखी है, और इसके लिए भी सीएसआर के बारे में ये होना जरूरी है। मान्यवर, भारत की जो सौम्य संपदा है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, उस संदर्भ में इस तरीके का एक प्रबंधन होना, इस तरीके की एक योजना होना कि सीएसआर का पैसा हम इन वास्तुओं की, इन इमारतों की रक्षा में खर्चा किया जाए, ये बहुत जरूरी है। मगर जो इस संदर्भ में चर्चा हुई, उस चर्चा का जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय जी ने जो अपनी भूमिका रखी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बढ़ाया हुआ बजट, मणिपुर जैसे हमारे उत्तर पूर्व के राजधानी के मणिपुर शहर के, मणिपुर के इम्फाल के निकट रानीमा गाइडिंग लू के नाम से एक स्टेशन बनाया जाना, और विभिन्न स्टेशंस को भी हमारी विरासत और हमारी धरोहर के अनुरूप नाम देने का एक प्रस्ताव सरकार के द्वारा आगे किया जाना, ये जो बहुत अच्छे सराहनीय और प्रयास इस सरकार के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हो रहे हैं, वो देखते हुए मेरे प्रस्ताव का जो भाव है वो सरकार ने समझा है। मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना ये प्रस्ताव पीछे लेता हूं। बहुत धन्यवाद। Dr. Vinay P. Sahasrabudhe, are you withdrawing the bill or should I put the motion to vote? Are you withdrawing? Yes, withdrawn. So the bill has been withdrawn.
हो गया. The Population Regulation Bill 2019, Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है. इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है. मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया. यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है. सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है. मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जो हम सुपरिचित हैं. 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है. 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है. जब जो जनसंख्या 1901 में थी, तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तो हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था. आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का. 2.4% लैंड है, 4% पानी है. इससे आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं. दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर, सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा ना हो. मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा. रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून है, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं. जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी. मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है. इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था. जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए. अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए. संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है. मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं. सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करे.